ago or last week, the doctors here, they asked me to have a session on breech delivery. Now, if we are not doing breech deliveries, then what do you want to know it for? Have you ever seen a breech delivery in your 1 year, 2 years, or 3 years? You haven't seen a breech delivery. And those who are participating on the net, have they seen a breech delivery? Yes, sir. Yes, sir. So then why learn about breech delivery? If you're not going to do breech delivery and you are going to do a cesarean section anyways, then why learn breech delivery? Now, this is something which I wanted to extract from you. What happens at cesarean section when you are delivering a breech delivery? That's a breech delivery too. Yes. Even at cesarean section. So if you are not aware of how to deliver a breech, even at the time of cesarean section, you will find difficulty. At even this stage, I am a little nervous while I am delivering a breech at the time of cesarean section. I'm more nervous than I used to be delivering vaginally a breech, even at the time of cesarean section. Because the baby goes through the same kind of issue, or can go through the same kind of, not exactly the same, but more or less that it does when it's delivering by breech. So, all right. So that is the importance of knowing breech delivery and various movements and various maneuvers which are associated with that. What are the types of breech delivery? Three types of breech delivery. कैसे शुरू किया करो? एक होती है complete, एक होती है drag, एक होती है Footling. footling और Incomplete. right? Incomplete और ये footling जो है ये incomplete हो गई. एक और भी No. वो extended तो वो है ना, extended complete Frank extended. ये extended भी इसको बोल सकते हो आप, extended. Okay. And I would want you to look up in the book or on the net the different types and how they present, right? So that you would know about frag. The baby is frag and it is usually extended, flexed at the hip joints, both legs, and extended at the knee joints. Usually, the fetal position is that the limbs are flexed at all joints. The arms are flexed at the shoulders and the elbows, and the legs are flexed at the hip joint and at the knee joints, and the baby is sitting in like that position. So that is complete breech, and this is the frank breech when the baby's legs are extended at the knee joints, and footling is that one leg is with the body and the other is dangling down. So these are the types. Now, what are the causes of breech delivery? For that, you need to understand a little bit about the configuration of the uterus or uterine cavity and how the fetus accommodates or adapts itself to the space available in the uterine cavity. You see, we are generally tuned to see the uterus in this fashion. So that the cavity is like that, and as term approaches, as it enlarges, the fundus of the uterus has greater space, and the lower pole of the uterus has comparatively less space. But and you know, when the incidence की बात थी, at 28 weeks of gestation, generally it is said that almost 20 to 25% of the fetuses, they are in breech position. But as pregnancy progresses, the fetus assumes it's a longitudinal line, but
the fetus assumes a longitudinal line with cephalic presentation. So it rotates around. And at term, the incidence is variously quoted, some quoted 3 to 4%, and some 5%. So 5% are breech at term. Now, it is easy to understand at term that this is the baby's head, this is the buttocks, and here are the limbs, and here is the placenta. So if you look at this, the mass of the fetal head is compared to the mass of the buttocks is comparatively smaller. So the baby occupies, the fetal head occupies a lower pole of the uterus, which affords limited space, and the buttocks, they get into the fundus. Anything which will change the available space into a rounded space instead of an oblong space, other space ऐसे कर दिया जाए, which is a rounded space, then that means the baby can be, the fetus can be in any position. It can be transverse, oblique, or breech, or now what are those things which can do that? Early pregnancy, when the lower pole is as yet not developed, it is comparatively closed, and that's why 20, this is 25%, right? So that's why it's like that. And if there is more fluid, so space is greater, more fluid, and the baby can assume any hydramnios or excess fluid. Or if oh yes, if there is something which changes the configuration of the space available, for example, a placenta which is attached here in the lower pole, placenta previa, or there is a fibroid which is lying here, and that is making it like that. So it is making this area too narrow for that, and also multiparity. In multiparity, the abdominal wall of the mother is lax. The uterus tends to kind of fall forwards, and the uterus itself also has been stretched time and again, and because of that, then it provides greater space. So laxity of the abdominal wall of the mother, as well as to some extent greater flexibility and stretchability of the uterine wall. So more multiparity here, and abnormality of the fetus. Hydrocephalic, large head. Abnormality of the uterus, as it is a unicornuate or unicollis, in that whatever position the fetus lies in, that it doesn't have room to rotate around. So uterine abnormality, fetal abnormality, anything which will change. So those are the elements which would increase the incidence of breech position. अच्छा जी, इसमें था हाँ definition होगी, importance, how is, अच्छा, now importance is not only that, how is it different from cephalic presentation? Why is it so dangerous? Why is it? Now this is something which we can explain essentially on a dummy. लेकिन हम dummy बना लेते हैं, I don't know. Now you see the point that I'm trying to make. थोड़ा सा अगर पता नहीं मुझे तो यार लगता है शायद now you see in cephalic presentation की कितनी किस्म की presentation हो सकती है? ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ऑक्सीपिटो 3 होती हैं सर। वर्टेक्स आमतौर पे जो स्पेस प्रेजेंटेशन, वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन,
there can be face Low presentation. presentation You get and face face presentation. and there can be a brow presentation. वो malpresentation, the Low base, the presentation. brow malpresentation, then vertex. But anyway, we are talking of cephalic presentation, so it is the head which we are looking at. Now, the head is there. Head is something which is not flexible enough to mold itself extraordinarily while it is passing through a comparatively limited and strict space, which is the bony pelvis. Whereas the buttocks, of course, can kind of be compressed and they because they are composed mostly of soft tissue, so they can go through that. Now, if there is cephalopelvic disproportion, that is between the head and the pelvis, the head will not come down. And when we give trial of labor in, say, borderline pelvis, if you see and if you assess the pelvis, which was something which was done at 36 weeks in primary gravitas, that one would assess, do pelvimetry, not necessarily pelvimetry by X-ray or other means, but clinical pelvimetry by which you would assess the capacity of the pelvis. In that, if you found that the size of the baby and the pelvis, they are maybe the baby will deliver or not. So that was generally called the borderline pelvis. Now, in borderline pelvis, you would give trial of labor. Now, trial of labor is that the woman goes into labor or you induce labor and the labor progresses. But if there is cephalopelvic disproportion, the head will get stuck. There will be no further progression. How do you assess the progress of labor? By two means: progressive dilatation of the cervix and progressive descent of the head. Now, if neither of that is happening, that means there is cephalopelvic. One of the reasons for lack of progress of labor would be cephalopelvic disproportion, and it announces itself, and so you abandon the attempt at vaginal delivery and you carry on cesarean. That's one. Secondly, when the head comes down, the head has a diameter of 13 centimeters as well, which may get stuck. But there is a mechanism, we know that the head gets flexed. There is a flexion which makes the head's diameter, which mostly in vertex presentation is 9.5 or 9.5 centimeters. So there is that mechanism of flexion by which a 9.5 centimeters or 10 centimeters would go through the pelvis. Not 13 centimeter, 13 centimeter, which is in the brow presentation, it will get stuck. It will not go through, the labor will not progress. Now, that point is important to remember also. Now, in what happens in breech, the softer part that will come down, the head is after coming. इधर ही खड़े हो ये आ गया और head जो है वो है ऊपर. Okay. Now, head has no mechanism of flexion. Remember? And particularly if you pull the baby from below, what will happen? It will get extended. Understand that? So if it uterus is pushing it down, and the effect of the uterine contraction, which is kind of encompassing it, that would be more or less to provide that the degree of some degree of flexion. But when it hits against the this pelvic rim, there would be a tendency for that to get stuck or get a little extension. So there is good chance that a larger diameter than 9.5 centimeter or 9 centimeter would may have to pass through that. And if it's a borderline pelvis, what will happen? That now a trial of labor जो है वो आप नहीं कर सकते, because इसमें वो कहते हैं कि trial जिस तरह से trial court में trial हो रहा है. This is a trial, the verdict of which will come today. When the verdict comes that it cannot make its way through this pelvis, then it is already too late. You can't do anything. Then the baby is dead. So the verdict will come if you are giving it. So in breech there is no trial of labor, and that is what happens. And therefore, there is no problem with the rest of the delivery of the baby's body. It is the problem with the aftercoming head, which has the tendency. Now, that also is, one is, of course, with the shoulders.
that you have to, now when it is coming down in the pelvis, the arms are folded in front of the baby. Now, this is the usual attitude of the fetus. ये टांगे भी उसकी इस तरह से हैं और वो भी इधर के। तो वो सारा कुछ ऐसे, right? So ये enjoying. तो वो इस तरह से, लेकिन और ये भी है, तो ये इसी तरह से आ जाते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। और लेकिन जब ये आ रहा है, लेट्स से कि ये इस तरह से है, ऐसे तो ऐसे, और ये वो it hits against the pelvic frame, there is a tendency that they may go up. Extended arms. अब extended arms जो है जब इस तरह से पास हो रहे हैं, तो पहले तो यही फांसते हैं। ओके, चलो आ गया यहाँ पे आके भी इस तरह से भी है। अब उसमें ये है कि वो जब हम आएंगे तो फिर then there is, you have to be careful about delivering there is no issue with the legs and the trunk, but there would be issue sometimes with the arms which may not remain flexed in front, but they become extended like that. So one is extension of the arm, and secondly, while arm is there, it will increase the mass of the fetus, which is to pass through the pelvis, right? So that is, and then you will have to do a maneuver which is known as Lovesets maneuver, L-O-V-S-E-T, Lovesets maneuver, to extract. वो बड़ी simple है, ऐसे पकड़ रखो, ऐसे रखो अपनी pelvis वो उस तरह से करो। इसको अब अगर ऐसे करते हैं, जब ऐसे, तो ये सामने आ जाता है, ये इस तरह से, और इसको पकड़ के फिर ऐसे करेंगे, वो उस डमी पे लिखा है। So these are the hazards because of it, or when the aftercoming head, one, it can get stuck. The second, if it comes down and if you deliver it suddenly, or there is a rapid delivery, then there is said to be a sudden compression of the head in the pelvic cavity and sudden decompression. So that can lead to intracranial hemorrhage. So intracranial damage because of obstruction, intracranial hemorrhage because of compression, and sudden decompression. So those are the points which why breech presentation happens, need to learn breech. Now you know, Yes, it is important to learn breech delivery, that if you are doing cesarean section, which I'm sure you will be doing a lot, but you should also learn. When I was registrar at that time, it was generally said that there are only two things that you have to learn through your residency, during your residency, registrarship. The rest comes along. One was breech delivery, the other was clearance. I will go to Acha ji. Thanks. Now management of breech. क्या है management? Management. Management. Let's of that. Hmm? Let's of मुझे पता नहीं क्या है। that. और कोई- Masterly inactive techniques, sir. Masterly inactive. Masterly inactive. Masterly in action. तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच इज डिलीवरी, मैंने तो कहा मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच। Elective cesarean. Single cephalic virgin, breech delivery, First we'll try external cephalic version. मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या है? External cephalic version. जंप करते हो 28 वीक्स में पेशेंट आई, वो कहती ब्रीच है डॉक्टर साहब, ये ब्रीच है, या आपने उसको बता दिया कि बच्चा उल्टा है, हालांकि वो बच्चा वो सीधा होता है ब्रीच तो वो, लेकिन वो क्या, सो व्हाट डू यू डू एट दैट टाइम? reassure me, reassure, sir, reassure. Yes, you explain to the
woman, not patient, to the woman. आजकल तो woman भी नहीं बोलते हैं. You explain to the people. You explain to the people that well, people. People क्यों कहते हैं? किससे समझ नहीं आई वो बताता है. ये तो अभी तो- गाइडलाइंस में people क्यों कहते हैं? ये अभी ये मर्ज अभी 2 साल से शुरू हुआ है. अब मुझे बताओ क्यों कहते हैं 2 साल? People, जब से ये gender. कपल को कह रहे हैं, कपल को कपल को Okay, let's not waste our time on that. So, what do? You explain and you reassure the woman. Not patient. She is not an ill person. So you reassure that it will get all on its own. It's bad practice to magnify the side effects or the complications, right? So that's not being a good doctor. You do keep them in mind that well, everything, and put them into perspective. So someone asked me how risky it is. I tell them that if you travel from here immediately hospital to Liberty, is there any risk in that? Yes. And immediately it's there here is. So I said that there is a risk associated with it. And we would go about our daily business without taking that risk into account. We start from our home and we go to the workplace, the hospital, and back, or we go to the market or shops, and we do not take into account the possibility because those risks are very small, and therefore highlighting the risks unnecessarily is not good medicine or good doctrine, and therefore one should give a reasonable extent. हम hysterectomy का पहले तो अब मैंने liberty कहना शुरू कर दिया. पहले I used to say that if you travel from here to Gujarat, there is greater risk of than going through a hysterectomy or something like that. So that's what you say. Now, if someone comes with placenta accreta, so what do you say? क्यों नहीं पहचाना? No, you don't start from there. That's what I would tell generally my patients, and आप भी अपने अपने patient को इस तरह से train करोगे कि पहले तो आगे तुमने मुझे positive चीज बतानी अगर हो, अगर वो आगे की पेन है, अगर वो ये पेशेंट कहे कि कल की निस्बत पेन कम है, जिस वक्त आपने सिजेरियन किया पेन है बहुत ज्यादा है, आप 12 घंटे के बाद जाते हो, एंड इफ द पेशेंट अगर इस तरह का वो उसका हो माइग्रेन, तो वो कहेंगे हाँ जी पहले से फायर. अगर आप फिर पूछोगे कि अगर वो कहे पेन, तो मैं उससे पूछूंगा कि जी ये कल शाम की निस्बत आप पेन ज्यादा है कि कम. अगर वो कहेंगे वैसा ही है तो फिर ऑफ कोर्स यू लुक अराउंड सी, बट इफ अगर कम हो रहा है तो दैट मींस कि वो ठीक. सो वो उनको आप पॉजिटिवली उस तरीके से पेशेंट को भी उसी तरह से चेक करो. Similarly, placenta accreta की जैसे मैंने मिसाल दी, if you are talking about placenta accreta, tell them that this is something which is attended with certain complications, but this is manageable. This is managed. We've managed so many people, so many of women with that, and you need not be afraid of that. We'll take all due precautions. We'll do various managements, and you will be all right. So you start with that. And then you tell that whether we need to have 10 or 20 cross-matched bloods, and you may have 2 surgeries or 3 surgeries, or there may be that thing, but all those are manageable. Because usually, वो जो होता है ना, this is too bad, this is a life-threatening condition, वो कह के तो आप. So similarly, अगर breach है 28 weeks में, तो आपने explain करना. And just don't let it go at, say, counseling. If I will counsel, this is a word which is now so commonly used, but not elaborated. So just saying that I'll counsel the patient is not enough. Counsel के क्या spelling होता है? I will counsel the patient. S-E-L. और वो जो CIL होता है वो क्या होता है काउंसिल? वो दूसरी काउंसिल होती है, वो काउंसिल होती है, ये काउंसिल करना होता है, राइट? अच्छा, तो you counsel the patient. That's not only I'll counsel the patient.
For everyone, when you say that you will counsel the patient or the attendants or the family, it should be, you should yourself, you can say this, you can use this word counsel, but what you are saying is that you will brief the patient or the family about the situation. That you will explain and give them an overview of what the situation is and what is needed to be done or what is going to be done or not done, right? So those 2, 3, 4 points which are relevant and which will need to be done or are planned to be done, those need to be also mentioned when in the examination you are asked what will you do? You will say, I'll counsel the patient. Meaning, in the same breath, you continue, you don't stop, don't give a pause. Say, I will counsel the patient as far as about the situation that this is going to get all right by itself. At this stage, the chances of incidence of breach is so much, and with the passage of time, the baby correct its own position, so you need not look before. Okay, so that's the point which you need to give. Or if the woman comes to you at say 36 weeks and it's a breech presentation, you say yes, this is the breech presentation, and in most of the instances and most of the doctors these days go towards the cesarean section, which is no big deal, and you shouldn't be afraid of that. That's a routine kind of surgery, right? But yes, that is more safe for the baby. But that has cesarean section is so common that many people now opt to have a cesarean section, but in your case, it is considered to be safer for you. Now you are at this stage, you as postgraduate, you need to substantiate your arguments or your counseling or your briefing of the patient or in the examination with certain background material, certain evidence. Now, what is the evidence for that? Why is it unsafe? हम डिलीवरी पहले करते थे नहीं, वो ट्रॉमा की बेबी को आप वो कर रहे हो ना, एविडेंस कहाँ से आई? इसलिए इस चीज के लिए आप में से जो नेट पे, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द एविडेंस? वो बोल रहा है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आपको एविडेंस का पता है? All right, I'll give you an evidence. I'll give you that evidence. Sir, there was published a study which emanated from Denmark. It was term breach trial. Term breach trial. मैंने आज अपना लैपटॉप खुला नहीं करी इसमें की term breach trial. पहले तो मैंने कहा कि आज के लिए मैं देखूं वो क्या है, तो उसका वो मैं आपको वो पूरा पेपर भी दे दूंगा, पूरा पेपर आप समझ के आपने कुछ नहीं करना, उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मैं आपको दे दूंगा. There were 2,083 women who were recruited in that trial. It was carried out in 26 countries and 121 centers. 2,083 women, 1,041 in one arm, in which they did elective cesarean sections and for breech, and 1,042 who were assigned to the breech group, vaginal delivery group, and they found that the perinatal morbidity mortality was higher in was way higher in the vaginal delivery group. For example, there were no complications, perinatal complications, and 90% of the babies delivered by it's about 90% in babies delivered by cesarean section, and the complication complication free was only 57.6%. So about 43% of the babies in the delivery group. There were many comments or objections, etc., to that trial. But that trial has kind of stuck in the mind of obstetricians, in most of the obstetricians, and they find it a good excuse to resort to a cesarean section and not do it. I myself find it to be convenient. One is that why should I? Because I distinctly remember that
There was one Eid day, probably I have told you previously, when I was a senior registrar on an Eid day, my parents had come from another city to spend Eid with us in Bhutan. And there was a staff nurse who had breached presentation, and she was in labor. And I spent most of the day, Eid day, in the labor room, watching her, observing her, going through labor, etc. And at the end of that, I did a cesarean section. But I gave her that trial, etc. etc. So I remember that. But बाद में क्या कर रहा था? Evidence. No, evidence. So now I myself, the first thing was that example that I told you was to show that I would give trial of labor to a woman who presents with breech. But now I take refuge in the results of this study, and I say the reason for that is not only to save myself of that labor, which I'll go through with a laboring woman, but it is that if something goes wrong, the patient can come back to me and say that if there is evidence that you should do a cesarean section, why didn't you do a cesarean section? I'll spend the whole of my day in that tense, stressful situation, and at the end of that, then I'm going to get that kind of feedback, which from the patient's perspective would be quite genuine, that they would ask me that, because they will not at that someone who gets a compromised baby is not going to take into any account my labor or my time spent with all that. So because of that, because of those legal etc. Things, I now resort to doing this. So small baby, and sometimes I tell myself this is not right, but that is right. Right. So that is the evidence. When I say that when you are giving an argument, clinical argument in favor of or against a particular management, then you need to have some backing of that, some evidence and some code. And as postgraduates, you need to have those ready references in particular. For example, you say that if this kind of hyperplasia is there on endometrial biopsy, complex endometrial hyperplasia, that is the report. And would you do a hysterectomy or not do a hysterectomy, or what else would you do? Then you need to bring in some evidence for that and quote that paper. And that of course will shut up the exam if you do that. Otherwise, you are shut or shut out. तो फिर अब और क्या रह गया? It's a demonstration. अच्छा, demonstration रह गई. मुझे फिर देख. हाँ, तो बात हो रही थी कि मैनेजमेंट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मैनेजमेंट है फर्स्ट इन द अर्ली पार्ट, दैट इज and then at 36 weeks then you decide either you are going to do a cesarean section or are you going to deliver her vaginally. वो मैं ब्रीच का ये आज से कितने साल बनते थे मैंने तुम्हें कल बताया था. I was assistant professor at King Edward or Lady Wellington from 81 to 85. हाँ, उस दौरान में there was a doctor who was 2 years junior to me in medical college. He brought his wife. He is a general practitioner. He brought his wife, and I delivered her, and it was a baby girl. अगले साल वो आए, and it was a hydrocephalic baby. उससे अगले साल वो आए, it was again a hydrocephalic baby. Now he was quite distraught, and coming from rural background के लिए तो इस मेल इशू नहीं हो सकता, इसका हाइड्रोकेफेलिक ही होता है वगैरह वगैरह. तो ये इस बैकग्राउंड में उसने दूसरी शादी कर ली. अब दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी वो था 87-88 की बात है. उस वक्त मैं प्रैक्टिस करता था फातिमा मोहम्मद में. अब 87 उस वक्त मुझे FCPS किए हुए 8 साल 9 साल ही हुए थे. 79 में मैंने किया था FCPS. तो खैर वो आया और वो breech presentation, and estimated baby's weight, it was a large baby, large baby, but the girl was tall and she had a broad frame, so I decided to do vaginal. तो उसने मुझे कहा भी कुछ दबे लफ्जों में कि जी cesarean. अब तब ये टर्म breech ट्रायल नहीं आया हुआ. मैंने कहा नहीं
ब्रीच डिलीवरी करूंगा। Sir, आप शुरू से एडवेंचर हाँ? और स्टार्ट से एडवेंचर तो मैंने वो कर ली ब्रीच डिलीवरी, इट वाज मोर देन 4 किलोग्राम्स बेबी, 4 किलोग्राम। तो अभी वो मुझे ये इस संडे को मिला था डॉक्टर को, वो उसका बेटा वो डॉक्टर बन गया हुआ, मतलब वो उसको कोई डैमेज नहीं है, ठीक ठाक था। वो उस तरह से था। अब प्रोफेसर मोहम्मद तैयब, जी सर हिज वाइफ, वो उसके 4 में से 3 बच्चे मैंने डिलीवर किए हैं। तो वो पहली उसकी प्रेगनेंसी तो ब्रीच, ये 91 92 की बात है। मैंने कहा नॉर्मल डिलीवरी। तैयब वाज वेरी नर्वस। तैयब रजिस्ट्रार था मेरा ख्याल है उन दिनों में, एसपीएस कर रहा था, ये कर ली थी। तो सो मच सो के मैंने कहा नहीं नहीं तो परेशान मत हो, मैंने बड़ी उसको रीएश्योरेंस दी। फिर उसने डॉक्टर राशिद से कहा, तो डॉक्टर राशिद ने मुझे कहा यार तू कर दो। तो फिर उसका वो बेटा जो उसका है, बाकी उसकी 3 बेटी, तो वो बेटा जो उसका उस सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर हुआ, लेकिन उसका नुकसान हुआ कि वो उसका बाद में वो प्लेसेंटा की कॉम्प्लिकेशन भी हुई, उसका एक सिजेरियन बाद में हुआ वहां पे यूके में। एनीवे लेकिन वो ब्रीच का मेरा करने का इस हद तक वो था। लेकिन अब जो है अब मैं नहीं करता, अब आ जाए तो ठीक। हाँ मतलब ट्विंस में जिस तरह से आ जाए, ट्विंस में है तो है? पिछले साल लेकिन वो फिर सिजेरियन किया वो एक लाख बात होती है ना, वो ट्रायल दे देना, लेकिन वो किया भी था हमने पिछले साल में एक दो जी वो उसमें आ जाता है, बट सर आपने हाँ लास्ट ईयर हाँ वो तो किसी से होती है। चलो खैर वो सो प्रेगनेंसी में व्हाट यू डू नाउ, वी कम बैक टू 36 वीक्स हो गए, अब क्या करें? नाउ वी आर डिबेटिंग वेदर वी आर गोइंग टू डू अ ब्रीच डिलीवरी और नॉट। इफ वी आर, पहली बात तो ये है कि उसमें आप देखो कि जी आप वो जो बात अब की थी कि नाउ देयर आर ऑप्शंस ऑफ ECV, external cephalic version, one. Secondly, if you second of course is elective cesarean section. Third is that if you would want to try a vaginal delivery, if you would want to do a vaginal delivery, then there are certain precautions or there are certain things that you will do. One is of course that you will assess the pelvis for its adequacy vis-a-vis the size of the fetus. Fetal size आजकल और fetal weight जो है, that's very convenient to observe and to estimate on ultrasound. So you will have a good ultrasoundologist will give you a good fair idea of the fetal weight. And then you now that brings into light the importance of pelvic assessment. हम ये pelvic assessment का वो ख्याल ही नहीं आया कभी किया। पहले जमाने में जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, उस जमाने में pelvic assessment was part of the routine antenatal. At 36 weeks, the woman would go through the pelvic assessment. ये बल्कि बाद में भी ये सर्विसेज में भी आके pelvic assessment किया करते थे। क्लिनिकल pelvic assessment जो है उसमें अगर जाओ तो क्योंकि आजकल करते वो नहीं है, तो वो इसलिए अगर मैं बाकी नेट से भी पूछूं जो तुम लोगों से सीनियर भी हैं, वो भी उसी तरह का जवाब होगा जैसे पहले दिया था। जब मैं पूछूंगा मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच क्या है तो मास्टर लीन एक्टिविटी, अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं, उस वक्त से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पेल्विस की असेसमेंट कोई बताए कैसे करते हैं? टेस्ट से जो चुप रहना भाई, सर ऑन नेट कोई बताएगा? जी सर। हाँ जी बताइए, पॉइंट बताओ। सर हाँ इन्फॉर्म वर्बल कंसेंट हो और पेशेंट जो है वो एम्पैथी ब्लेडर के साथ जो है डॉर्सल लिथॉट में यहीं पे रुक जाओ। कंप्लीट हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। पेल्विक असेसमेंट होती है, मरीज की चाल देखो, मरीज लंगड़ा के तो नहीं है, हाँ, चाल देखो, उसकी हाइट देखो, उसका शू साइज देखो, दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द बोनी फ्रेम। पहले तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसमें स्पाइन का एग्जामिनेशन भी आता है, स्पाइन की एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है,
लेग्स की एबनॉर्मेलिटी, पेल्विस की एबनॉर्मेलिटी, ये सिर्फ चलने देखने से और जनरल फिजिकल, सिर्फ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन या उसकी आखिर हिस्ट्री में भी चीज आएगी, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू स्पाइन, ट्रॉमा टू लेग, ट्रॉमा टू पेल्विस, any disease which would affect like tuberculosis, rickets, etc. जो कि अब नहीं है, लेकिन वो अब tuberculosis बहुत कॉमन होगी, वर्ल्ड वाइड इट्स वेरी कॉमन. सो वो अगर ऐसी डिजीज रही हो और स्पाइन की tuberculosis, सो हिस्ट्री से शुरू होता है, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. वो जरूरी है कि पेल्विस कोई एसिमेट्रिकल तो नहीं हुई बिफोर यू गो ऑन टू दैट. उसके बाद हिस्ट्री में एक और चीज भी आएगी, उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, प्रीवियस अगर उसकी डिलीवरीज हैं या क्या है. तो लेट्स से हम ब्रीच के लिए अगर असेस कर रहे हैं, तो प्रीवियसली अगर कफेलिक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में उसकी 2 डिलीवरीज हुई हैं, तो बच्चों का साइज क्या था, वेट क्या था, कि अगर उसने 3.5 या 3.9 या 4 किलोग्राम का बच्चा डिलीवर किया हुआ है, इस दफा आपका ख्याल है कि 3.2 किलोग्राम का बेबी ब्रीच है, तो वो आप समझो. सो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. अभी पेल्विक एग्जामिनेशन की तरफ नहीं हम, ठीक है, लेकिन वील सेव दिस टॉपिक फॉर सम अदर टाइम. सो ये अप्रोच जो है कि आपने असेसमेंट कैसे करनी है. सो एट 36 वीक्स पहली बात यह है कि आप क्या करोगे, एक्सटर्नल वर्जन, अगर वो नहीं होती तो फिर आप ऑप्शन है सिजेरियन सेक्शन, और फिर आप इफ यू हैव टू और यू वांट टू डिलीवर हर वेजाइनली, देन यू विल परफॉर्म pelvic assessment, और जो इस तरीके से होगी. And pelvic assessment should be not borderline pelvis, it should be incontrovertibly or without any doubt it should be adequate enough for breech delivery. ठीक है, तो ये होगी pelvic assessment की बात. उसके बाद फिर लेबर की बात आ गई. Now once the decision has been made that you will deliver vaginally, तो फिर आप उसको then you will let her go into spontaneous labor. और फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट वही है जो नॉर्मल मैनेजमेंट है, और जो मैं किसी से भी पूछूंगा तो मैं उसको बड़ी आसानी फेल कर सकता हूँ फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट. थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट में तो सब कोई फेल कर सकता हूँ वैसे नॉर्मल थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट में. ये याद रखना जो सुन रहे हैं, इसलिए अगर किसी को जरा जोम हो तो बेशक मुझे इंटरव्यू दे दे थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट में. अच्छा, फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट जो है वो यूजुअल, इसका मतलब ये हुआ आज इतने सारे सवाल तुम लोगों के पास हो गए जो तुमने होमवर्क पढ़ा है. लिखो pelvic assessment, लिखो मैनेजमेंट पॉइंट्स लिखने, डिटेल मत बताना, पॉइंट्स लिखो. मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, व्हाट इज ECV एंड व्हाट आर द contraindications to ECV. एक्सटर्नल cephalic version के लिए contraindications क्या हैं, in what circumstances you will not do that, right? और जैसे वो ब्रीच के बारे में मैंने बताया, टाइप्स, कॉजेस, वो सारी तुम्हें पता होनी चाहिए. And what kind of fetal abnormalities, what kind of uterine abnormalities will cause changed configuration of the uterine cavity. अच्छा जी, और फिर फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट आ गई, इसलिए फिर सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट भी कर लो. सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट ये नहीं होती कि जैसे ही फुली डायलेटेड हुई तो लिथोटमी में काम होते. नो, you should know when you would put the patient in lithotomy position. In primary gravida, not before the perineum starts to stretch, not before that. And in multigravidas when the head is well down. अब आ जाओ ब्रीच की तरफ, ये मैं दूसरी जनरल बता रहा हूँ. हमारे वो फुली डायलेटेड है जी, अब कुछ कम लोगों ने तुमने कर दिया कि जब हेड जरा नीचे है तो फिर शिफ्ट करवाते हो, लेकिन शिफ्टिंग का मतलब है कि जी पेशेंट को उठा दिया. बड़ी स्मार्ट लग रही हो तुम. मुझे पता नहीं, मैंने कहा ये नहीं मैं विदाउट कैफीन में चाय के बगैर नहीं जिंदा रह. तो मैं अभी अनाउंस कर रहा था, मैंने कहा फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट में मैं जो नेट पे भी है ना, मैं क्या मैं फेल कर सकता हूँ लोगों को हर किसी फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट, है ना. अच्छा चलो, नहीं मैं ऐसी नॉट प्लेयर आउट ऑफ डूइंग दैट, मैं वैसे कह रहा हूँ कि तुम लोगों को अपना नॉलेज, अपनी एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज नीड्स टू बी
brushed up so well that you will accept my challenge. And I'll be very happy if I'm proved wrong. I actually will be happy. मैं ये बताना चाह रहा हूँ. Not that कि मैं तो तुमको मैं ऐसे करता हूँ. टेबल या गाइड भी पढ़ा. हाँ. क्या वो बड़ा कुछ पढ़ाना चाहिए. आज मैंने अभी ब्रीच डिलीवरी में पढ़ा रहा हूँ. मुझे पता है मैं इसके तो वो अभी मैंने पूछा कि हाउ डू यू मैनेज ब्रीच. तो उन्होंने कहा ये कि मास्टरली इनएक्टिविटी. मैंने कहा प्रेगनेंसी में कुछ नहीं करोगे. अच्छा, तो फिर अभी फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट थी. फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट एज यूजुअल वो होगी उस तरह. सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट, अर्ली मैनेजमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज इज एज यूजुअल. यू वुड लेट द पेशेंट गो वो पेन्स और प्रोग्रेस और वो देखते जाओगे. And then of course you will shift the patient to the second stage or delivery room. और वहां जाके भी आप उसको देखते जाओगे. ब्रीच जो है वो नीचे आ रही है. When the breech is stretching the perineum, that is the time that you put the patient in lithotomy. मैं पहले असल में उसके करता. उस वक्त आप lithotomy पोजीशन में डालते. अब आती है मास्टरली इनएक्टिविटी का मतलब. मास्टरली इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि खुद भांग पी के सो जाओ. मास्टरली इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने अननेसेसरी मेडलिंग नहीं करनी. इट इज टू एम्फसाइज द अदर पॉइंट. The point is that instead of saying that you don't meddle, you don't interfere or intervene, let it progress on its own. That is masterly inactivity. So that's why it is considered. ये expression इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. But you are vigilant, you are watchful, you are looking at the whole progress visually as well as by digital examinations. And then when you see that the perineum is getting stretched, lithotomy में हो गया. अब आप बैठ गए तैयार हो और हाथ बांध के. ये मतलब है ये literally हाथ बांध के आप इस तरह से बैठते हो ताकि आप इंटरवीन ना करो. When you see the आप बटक्स आ रही है ना, उसका हेड नहीं, बटक्स आ रही हैं और एक बटक होगी anterior, एक होगी posterior. So when you see the posterior buttock climbing the perineum, that is the time to do an episode. उस वक्त आप करोगे episode, right? और उसके बाद हाथ बांध के फिर बैठ जाओ. ठीक, ये मास्टरली इनएक्टिविटी है. ये वो आपने एपिसोड में करके let the buttocks and parts of the legs, if they are free, they can come down. या आने दो. You will not touch the baby till the baby's trunk is delivered up to umbilicus. That is the time when you can flip out the legs if needed. ये इस तरह से करके ऐसे करके flip out करना, ऐसे पकड़ के नहीं खींचना. वो नजर नहीं आ रहा. ऐसे करना है so that you bend the knee. आप fingers ऐसे करके इस तरह से करके flip out करोगे. और वो and ये अब वो वैसे वो उसने इतनी डिटेल में सारी चीज बताई हुई. And if you find that the cord is a little, so you can pull the cord a little bit down so that it's I not. just want to add one thing. The whole concept of breech delivery is flexion. हाँ, ये High joint पे flexion. That is how the baby is going to deliver. If the baby is any part of the baby is extended, it will not deliver. Neck extended होगी तो stuck हो जाएगी. shoulder extended and also मसला होगा. का problem होगा. अगर आप knee extended है तो deliver नहीं होगी. That's why when he did that movement, तो उन्होंने knee को क्या किया? Flex किया. तो examination में लड़कियां बहुत focus करती हैं movement कौन सी थी, वो भूल गई. लेकिन अगर ये बात याद हो कि सब पे flexion करनी है तो movement खुद ब खुद याद आती है. फिर कोई problem. So it is flexion. Reflection or flexion. So now वो masterly inactivity अब होगी खत्म. अब once it's delivered up to this, then you pass your hand in front of the trunk of the baby and look for the arms, which should normally be folded in front. And if you do not find arms over there, that means the arms are upwards. They are extended, one or both. So they are extended. Now you will have to do the Lusset's maneuver to release the arms. तो extension उसके लिए ये है, you take जो sponge होता है,
जो हम सर्जिकल स्पंज, उसको क्या बोलेंगे, स्पंज को और क्या बोलते हैं, हाँ स्पंज ही, वो जो होता है Towel. टॉवल, हाँ यस, स्मॉल टॉवल से सर नजर नहीं आ रहा। you surgical small towel, and you with that you hold the buttocks of the baby. दोनों को इस तरह, हाँ, you hold the buttocks of the baby like this, और वो पकड़ के, अब आपने ये अगर एक्सटेंडेड आर्म्स हैं तो आपने ये वाली जो है इसको, जब आप अगर इसको रहने ये, you move the trunk, keeping it, the trunk should be kept upwards. You move and rotate it through 180 degree circle. तो ये जो ऐसे करके होगी ना, ये ऊपर extended, and usually it is extended and it gets onto the back of the, when you rotate it through that, ये यहाँ से वो pelvis में ये सामने आ जाए, then you pass your hand and flip it out. Here then you rotate it through 180 degrees onto the other side, और ये वाली जो है ये सामने है, क्योंकि इसको अगर आप in the pelvic cavity अगर इसको करोगे तो you will break a bone. So you don't do that. So when you rotate like this, this will get in, not hyperextended towards the back. It will be up, but it will come in front of ventral surface की तरफ आ जाएगा. Then you can flip it out. अब आ गया है आफ्टर कमिंग हेड. आफ्टर कमिंग हेड को डिलीवर करने के 3 तरीके हैं. एक है वन मार्शल मैनूवर, उसमें यू लेट द बेबी हैंग लाइक दैट फॉर अ लिटिल व्हाइल टिल द नेक ऑफ द नेक इज विजिबल. जब वो विजिबल हो तो फिर आप ये करोगे कि इधर है वो, इधर से पकड़ा इसकी टांगों को, ब्रिंग इट straight ले जाके, while you support the perineum with this hand, you, or the head also, you rotate the baby towards the mother's abdomen. उधर तक लेके नहीं जाना. When you do that, the baby's head will also make a move over the perineum and come out. ये है blunt motion. But you let the baby hang. You can let it hang for a little while because umbilicus से उसको आ रही है. दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं शोल्डर जॉ ट्रैक्शन या मॉरिशियस मैलीवीट मैनूवर. उसमें you pass for right handed people, you pass your left hand along the body of the baby and pass the middle finger into the mouth of the baby, or index और ये ring finger जो है over the maxilla, और ये दूसरा हाथ जो है इसको इस तरीके से ये over the shoulders, and you pull the baby's mouth downwards for flexion, and then apply traction on the shoulders. You have now flexed the head. और वो करिए. उससे पहले, while you have done that, those lovesick maneuver, at that time ask your assistant to apply pressure over the suprapubic region to increase the fetal head's attitude of flexion and to facilitate its entry into the pelvic cavity. तो वो तो आ गई. So Mauritius मैलीवीट मैनूवर ये हो गई. और तीसरा है जो कि preferred method आजकल कहा जाता है, वो है forceps application. The assistant holds the baby in a slightly elevated position with the legs not straight up, but so that you can apply forceps from below, outlet forceps as you usually do. Not that you have to align it with the inguinal ligament, but you can apply directly and extract the baby out. Now all these methods, except for of course Burn Marshall, they can be also applied at the time of cesarean section. So आमतौर पे वहाँ पे, and don't pull too much over the shoulders. वो neck के यहाँ पे सारी nerves जो हैं वो they get disturbed और वो फिर मसला हो जाता है. तो इसके लिए shoulder jaw traction से कर सकते हैं या even forceps से कर सकते हैं. And make an adequate incision if you are even. हाँ ये है cesarean section में मत समझो कि आप, मैंने कहा कि जी ब्रीच की इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रीच डिलीवरी तो हमें करनी नहीं है तो फिर सीखना क्या है. फिर मैंने उनको बताया कि सीखना इसलिए जरूरी है कि even at the time of cesarean section you do a breech delivery, and that is something which is as important as the normal. मतलब उसने, so make an adequate incision. There should be an adequate room. मतलब ये नहीं कि छोटे incision में से मैंने डिलीवरी कर लिए थे, वो कोई क्रेडिट नहीं, और इसलिए वो adequate होना चाहिए.
और उसमें बेबी का हेड जो है उसको एहतियात के साथ, क्योंकि सडन कंप्रेशन डीकम्प्रेशन यहाँ पे भी हो सकता है, तो वो यूट्रस का एलसीएन भी प्रॉपर, और उसके साथ उसको डिलीवर करना है विदाउट कॉजिंग टू मच स्ट्रेच ऑफ द नेक। ठीक है, अब इसके बाद कोई और अगली दफा सवाल होंगे पूछूंगा मैं, लेकिन अभी ये आज के सवाल जो मैंने दिए उनको जाके देखो और इसको प्रैक्टिस भी कर लेना बेशक। ठीक, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? रह गया मेरे के सारे उठे चले गए? सर अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। जी जी सर जो आर्म्स की करनी है, एक्सटेंडेड आर्म्स होती हैं जब, हाँ तो जी। सर आपने रोटेशन का बताया, अगर हम रोटेट कर रहे हैं, एक आर्म तो फ्लेक्स हो रहा है, वो बैक साइड जब फिर ऑफ दूसरी तरफ मतलब करेंगे तो लड़का दूसरी फ्लैक्स हो जाती है आर्म ना। सीधा हो रहा है। हाँ, पहले आपने एक तरफ किया, ये पहले आपने एक तरफ ऐसे किया, फिर आप वापस उस तरफ कर देंगे तो वो दूसरी भी हो जाएगी। बन मार्शल ऑब्सोलीट नहीं हो गया, बन मार्शल कर लो अगर करना चाहिए तो उनको करना। हाँ वो होगा, नहीं ब्रीच नहीं होती, ब्रीच नहीं होती तो वो क्या मुश्किल से लिया उनको। बच्चे पार्टी एक दफा ये सर्विसेज की बात की, मुझे पता हो एक दफा मैं डिलीवरी कर रहा, वो फॉर्चुनेटली वो डिलीवरी टेबल जो थी ना सर्विसेज की, उसके ना नीचे ट्रे बनाई हैं, वो नीचे वो ट्रे बनी है, उसमें चला गया। बच्चा मैंने कहा, और वो एक डॉक्टर की बीवी थी, और डॉक्टर बाद में प्रोफेसर थे, गानी रही था, तो वो लेकिन वो जो था वो जो ट्रे थी उसने दैट सेव द पॉट, तो खैर था। तो बाद में वो लड़की भी डॉक्टर, वो बाद में मेरे से पूछने लगी कि वो क्या हुआ, तो वो मैंने कहा वैसे ही उसको थोड़ी बताता कि चलो जी ओके।